ये बजट एक ऐसे समय में पेश किया गया है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है, खासतौर से टैरिफ को लेकर एक पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में भारत किस तरह से इससे निपटेगा और किस तरह से हम आत्मनिर्भर से भी आगे बढ़ पाएंगे, जिस तरह से कोविड के बाद एक आत्मनिर्भर का नारा दिया गया था। इस पूरी चर्चा पर जो बजट की टीम है हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी श्री वी गोलनाम सर एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर श्री वी अनंत नागेश्वर सर। सीएनबीसी आवाज़ में आपका स्वागत सर, दोनों मेहमानों का। सर, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूं सर, जो एक पूरा बजट का एक पूरा पैकेज था, पूरा फोकस था किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर से आगे हम अपने आप को किस तरह से इस ग्लोबल पोजीशनिंग में अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को मौजूद रखेंगे, उसको फोकस था। तो किस तरह से जो हमारा कैपेक्स का फोकस है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फोकस है, वो इस बजट में बरकरार रखा गया है। कैपेक्स में भी अच्छा खासा 12.2 लाख करोड़ का आउटले दिया गया है सर। You know, first of all, the Aatmanirbharta or the Make in India has really turned out to be something visionary from the global events and the different events which have happened, and we must thank the leadership that we have for having taken us on this path of Aatmanirbharta. And this year's budget continues that focus on the Aatmanirbharta, the focus on the manufacturing, the focus on the specific sectors like the rare earth and several other sectors. So it's something which has been the focus or the priority of the government for some time, and this budget is also clearly on that same path. Sir, on the front of skilling and employment, ये बजट कितना खरा उतरेगा, कितना जो इस दो जो समस्या है, खासतौर से जो यूथ की स्किलिंग है, जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं और साथ ही साथ जो जॉब की ज़रूरत है, उसको किस तरह से पुश करेगा, क्योंकि खासतौर से बहुत सारे ऐसे सेक्टर में एलोकेशन किया गया है जहां से सीधे जॉब जनरेशन है, चाहे वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे और भी अलग अलग सेक्टर्स हो। तो किस तरह से इसको, इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए बजट में एलोकेशन किया गया है? So one is, yes, as you rightly said, the sectors where lots of labor employment potential is there. In fact, the textile sector has also been seen as a labor intensive, and much priority has been given there also. And also, if you see the schemes which we have taken up in the recent past for skilling, developing all our ITIs so that they come into world standard kind of skilling centers, the internship program, the Pradhan Mantri, the Rozgar Yojana. So in that way, the skilling and the internship and the employment for the youth has been a focus. Sir, next question to you, sir. सर, जिस तरह से आपने इकोनॉमिक सर्वे में एक बेस रखा स्वदेशी का, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, बजट में कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से देखें तो पूरी झलक देखने को मिल रही है, और खासतौर से स्वदेशी और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पर जिस तरह से बड़ा फोकस दिया गया है, वो जो शुरू में बात चल रही थी कि आत्मनिर्भर से हम कैसे अपने आप को इस स्थिति से निपटेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरह से मेक इन इंडिया 2.0 कहें तो 3.0 कहें तो बेहतर होगा सर इसको, जिस तरह से पूरे, चाहे वो कस्टम एक्ट से लेकर, चाहे हर तरफ से, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर हर जगह से कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंडिंग की भी दिक्कत ना हो, एक्सपोर्ट में भी दिक्कत ना हो। किस तरह से पूरे एक पैकेज को क्रिएट किया गया ताकि मेक इन इंडिया क्रिएट हो सके, मेक इन इंडिया को और पुश मिल सके? I mean, I think your question carries with it the seeds of the answer itself, that it is a complete package, because one is with respect to the specific sector that have been chosen for giving extra emphasis and priority, starting from biopharma all the way down to textiles and so on, and also looking at some of the input areas, whether it is nuclear energy, construction and infrastructure equipment, and electronic components, and then aircraft parts manufacturing. So if you look at it, there is a focus through higher expenditure, there is a focus through lower input cost, and there is also a focus on skilling. So these kind of are very much what we wanted the government to focus on, and we have outlined in the economic survey in chapter 16, where if the country has to sort of position itself strongly, given that supply chains can be disrupted and trade is no longer free, and supply and product imports can be weaponized, etc., then we also laid out a framework as to which ones we should indigenize first and which ones we should indigenize later, which can be left to the market forces, and where the government has to sort of give a nudge, etc. All those factors have kind of played out in the budget
in some fashion. So we are very pleased with the fact that this is a strategically oriented budget, even if it doesn't say so in so many words. Yeah. रही बात सर फार्मर को लेकर मोदी सरकार का हमेशा से फोकस रहा है, फार्मर्स की इनकम को कैसे दोगुना किया जाए, उससे आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर से पिछले बजट्स में हमेशा देखा जाता है फिशरीज को लेकर, चाहे हमेशा जोर रहती है कि किस तरह से फार्मर की इनकम बढ़ाया जाए। इस बार जो 3 C's का देखा जा रहा है, कोकोनट, कोको एंड कैशू, ये तीनों ऐसे हैं जो कैश क्रॉप होते हैं सर। इसको किस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की गई है इस बार बजट में, और कोकोनट को लेकर खास तौर से एकदम कैश क्रॉप है, इसको लेकर काफ़ी इकोनॉमिक बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है, कैसे इसको एड्रेस किया गया इस बजट में सर? I think if you look at it, it's also an important thing. I mean, we missed out walnuts and pine nuts, etc., yes, which are also mentioned there. And then there's a focus on animal husbandry, there's a focus on fisheries, etc., because these are all the sectors that have been growing at almost double the growth rates of the traditional crops, and therefore it's also a signal to the farming community that there is a need to diversify in the crops section, which is something which we wrote about in the agriculture chapter in the economic survey as well. So I think there again I see this as some sort of a subtle nudge on the part of the union government by encouraging farmers and sending the signals that the government is committed to incentivizing farmers to take up these kinds of areas which are much greater potential and where we need to achieve self-sufficiency as well, or where we could actually become an exporting a significant export player as well. वन मोर एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट होती है वो टूरिज्म। इंडिया का पोटेंशियल अभी टूरिज्म में कहते हैं कि अभी अनलॉक भी नहीं हुआ है, पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो टूरिज्म को लेकर भी बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, चाहे वो सी प्लेन की बात हो, चाहे इसके अलावा बुद्धा सर्किट क्रिएट करने की बात हो खासतौर से नॉर्थ ईस्ट एरिया में, या फिर अगर बात करें तो जो गाइड्स को ट्रेनिंग देने की बात थी, बहुत छोटा कदम है लेकिन एक बहुत बड़ा कदम टूरिज्म सेक्टर में माना जा सकता है। एक पूरा ऑडियो विजुअल सीन क्रिएट करने की बात हो जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट टूरिज्म प्लेस हैं, तो इसको लेकर किस तरह से एलोकेशन किया गया है, क्या क्या एलोकेशन हुआ है, और किस तरह से टूरिज्म सेक्टर में जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है वहाँ पर कितना पोटेंशियल है जॉब का, और कितना इस बजट से कितना पुश मिलेगा? In fact, for tourism, India is a country which is really blessed, and I think it is now being fully recognized, the number of historical sites that we have, and this budget has rightly pointed out some of the areas where we can develop, and in fact it's not only the tourism ministry but even the archaeological survey of India which comes into play, or the way we issue the e-tourism visas so that people can come in very easily, because as much as domestic tourists, we would also like to encourage the foreign tourists to come in. So it's a multi-pronged attack, and we are confident that with this budget announcement the tourism sector will see unprecedented growth. वन मोर सेक्टर सर जहाँ पे जेनजी सबसे ज़्यादा रिलेट करता है वो है ऑरेंज इकोनॉमी, जिसकी बात एफएम ने कही थी, एवी जीसी सेक्टर्स और तमाम चीज़ें। ये कितना बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, और ख़ासतौर से जेनजी जिसको लेकर आज सबसे ज़्यादा है, वो कितना इससे रिलेट करेगी, और बजट में इसको पुश खास तौर से दिया गया है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा सर इससे? No, I think it will make a big difference, because it's not so much about the difference that the government's prioritization of this will make is not determined only by the budget allocation. In fact, I would open up your question to the other areas which the government has focused on with respect to the allied health professionals, care ecosystem. Then you mentioned to my colleague Mr. Mang about the number of tourist guides being trained, etc. So if you look at these four together, what connects these four is allied health professionals, care economy, tourist guides, orange economy. Again, these are areas wherein we want our youth to focus, because traditional jobs could be taken over by AI in cognitive roles. But these are roles where the human touch matters, creativity. Tourism, people want to see the connect with the local population, and healthcare, counseling, psychiatry, all these areas human touch is important and will make a big difference. That is where the big difference will happen. So in that sense, I see the orange economy as part of a skilling ecosystem where we encourage our youth to be independent of the impact and the influence coming from AI. And that is how I would position the emphasis on orange economy in the overall scheme of things.
सर लास्ट सवाल सर आपसे जानना चाहते हैं सर कि एक क्लैरिफिकेशन, जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसके लिए भी एलोकेशन 95,000 करोड़ किया गया है, साथ ही साथ एमजी नरेगा के लिए भी किया गया, किस तरह से ये दोनों वर्क करेंगे, क्योंकि एक को तो फेज आउट होना है सर? Yes, in fact now our employment scheme is the Viksit Bharat Ji Ram Ji scheme by an act of parliament. The Manrega scheme is now really to be closed down, but on one, while we have provided the full budget requirement for the Viksit Bharat Ji Ram Ji scheme, 95,000 crore rupees, the provision which has been kept for the Manrega is really for their committed liability, which in the coming financial year some disbursements will have to be done after verification. After that, that scheme has really come to an end. It will close down and it will end. And last question, sir, on the railway, sir. Railway, there is a lots of announcement on the railway also. So railway में अब एक next level की जो security और facilities की तरफ ज़्यादा focus है सरकार का, कि रेलवे जो लाइफलाइन कही जाती है उसको ज़्यादा नए रूट्स और नए और भी रेलवे के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है सर? See, railways, we must first recognize and appreciate the volume of people that they carry, you know, every day. It is in fact equivalent to some of the European country or some of the countries. So that much of people are being transported every day. It's a huge institution that is connecting our country from north to south, east to west. Now within that, the infrastructure development has also been moving very well. In fact, every year they either additional lines or brand new lines up to 3,000, 4,000 kilometers are being constructed every year. So that is moving on. And what was announced in the budget, the dedicated freight corridor, again is another very exciting development which has happened. The eastern corridor, the western corridor, they are all showing huge potential, because the average speed of the freight trains are much higher than what was there earlier. It is double. So that will be replicated to more parts of the country, and we believe that the freight, which today 75% is carried by our truck transport, has to really change. You know, the heavy cargo has to move by trains. So with these announcements and these new projects coming up, we believe that that balance will be optimized, and it will be good for industry, it will be good for the country. Yes. Last question to you, sir. We all live in Delhi NCR, and major concern is pollution. Yeah. So is there any attempt to address the pollution in the budget? You may not have seen it in the budget, but then if you look at it, a lot of reforms have happened in the last 6 to 8 months outside the budget. And this is one area where I think the Union government has been working with state governments through many schemes, some of which are funded by multilateral agencies, some of which are funded out of the budget, etc. So that initiative will continue. So it is by things that don't figure in the budget doesn't mean that they don't happen. And they are very much on the government's radar. Thank you. Thank you for talking with CNBC Awaaz. Thank you very much. Thank you.